A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home, children. And as you all are a board student, so I just hope and expect from you all that you all are working very hard. And now, children, as I told you that it's now not an optional for you all to see these video. Now it become mandatory for you all. As we are discussing the previous year questions, so it's very important for you to see this, that how you will write the particular answer of any particular question, and how you will attempt that one. And here you will get to know that which questions were asked in which year paper and what is the weightage of the marks of that particular question. Now, the important point is here, we are discussing the papers of the previous years and which was based on your revision test 3 which was going on. You already have given the 5 revision tests, the 6 revision tests which you are going on the therapeutic approaches. I had discussed with you that one already, and right now I am making the video on the part 7 which is cover the chapter 1 variations in psychological attribute. In that regarding, I am going to discuss with you some of the questions. So first question is from that particular chapter is part 7 which is a intelligence chapter. Okay, part 7 which is an intelligence chapter. So the first question which is asked is explain linguistic intelligence. Explain linguistic intelligence. This is a question. Explain linguistic intelligence. This is a question which was asked in the 2 marks and in the paper of 2014 or 15. 2014 और 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस वन. ओके, सो आंसर आप ऐसे करेंगे, आंसर लिखेंगे और देन यू विल पुट डाउन द हेडिंग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. This should be your heading. Now you will describe about this one, that what is it. So linguistic intelligence is related to the language. Okay, this is also a type of intelligence, and it is a type of intelligence which is given by the Gardner. Gardner told about the multiple intelligence. He told that no single intelligence is found in an individual. The individual is having the multiple intelligence. सो मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने बहुत तरीके के इंटेलिजेंस के बारे में बात की. सो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज वन ऑफ दैम. ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसी में से एक है. तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज आर जिनके में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, दे आर नोन टू बी एज द वर्ड स्मार्ट. सो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज. इट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज एंड सच काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज वर्ड स्मार्ट. ऐसे लोगों को जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, हम उन्हें वर्ड स्मार्ट कहते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि दे हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज. व्हाट आर द पर्सन हु कम अंडर दिस वन? द राइटर, द पोएट एंड द राइटर, पोएट एंड यूजली रीडर्स. इन सब में हमें लिटरेचर से जो भी जुड़े होते हैं, आर्ट से जो भी जुड़े होते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाता है. अगर हम इससे डेफिनेशन के टर्म में आए तो आप इसको डिफाइन करोगे. इट इज अ कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड बी सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग. It is the capacity to use language fluently and be sensitive to different shades of word meaning. This involves using language fluently and flexibly. Person high on this intelligence are known as word smart. Poet writers are strong in this component of intelligence. So you will write it.
It is the capacity. It is the capacity to use. It is the capacity to use language. It is the capacity to use language fluently. It is the capacity to use language fluently and be sensitive to different and be sensitive to different and be sensitive to different shades of word meaning. It is the capacity to use language fluently and be sensitive to different shades of word meanings. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसमें. I hope you all are writing. Now इसमें further मुझे add on करना है. If you all will write it down, so I am going to rub it. I just hope आपने इसे लिख लिया होगा. Okay. इसके बाद आप इसमें लिखेंगे This involve using language. This involve using language fluently and flexibly. Fluently and flexibly. Okay. Then person high on this intelligence. Person high on this intelligence is known as person high on this intelligence are word smart. Okay. Then you will write down poets and writers come under this one. Poets and writers come under this category. Come under this. ठीक है? So this will be your answer. I hope आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा. Okay. So now you can attempt this question. So linguistic intelligence वो intelligence होता है जिसमें पर्सन का बहुत ही अच्छा कमांड होता है लैंग्वेज पे, फ्लुएंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और उन्हें वर्ड स्मार्ट कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई एम रबिंग इट with the hope that you all have written it down. आप सभी ने इसे लिख लिया होगा. ठीक है. So let's discuss the second question from this chapter only. The two question also we have discussed from this chapter yesterday, the differentiate between psychometric and information processing approach, and then we have discussed the difference, what is the simultaneous and successive processing. Today we have discussed about the linguistic intelligence. So moving toward to the next question. The next question is classify people on the basis of IQ. This is a question which was asked in 2015 and the weightage of marks is
2 मार्क्स। इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में भी पूछ सकता है, क्लासिफाई द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ, या फिर यू विल नोट डाउन द क्वेश्चंस आल्सो चिल्ड्रन। ओके, हाउ आर IQ scores, how are IQ scores distributed, how are IQ scores distributed in a population, how are IQ score distributed in a population। सो इस तरीके से दो क्वेश्चन दोनों वे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप इसे नोट डाउन कर लें तो हम इसके आंसर पे आए। सो आई एम रबिंग इट विद द होप कि आपने लिख लिया होगा, because I am dictating it also and I am writing it also. So answer is, इसमें पूछा है कि IQ स्कोर कैसे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या क्लासिफाई करना है आपको लोडो टू ऑन द बेसिस ऑफ IQ। तो आप इसे टेबल के फॉर्म में बताओगे। यहाँ पे आप लिखोगे IQ रेंज, और यहाँ आप लिखेंगे लेवल्स। तो जैसे फर्स्ट IQ रेंज होगा आपका अबव 130, देन है 120 to 130, देन इज 110 to 119, 90 to 109, then 80 to 89, then 70 to 79, and then is the below 70। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन है। तो सबसे पहले अबव 130 में आपके आएंगे वेरी सुपीरियर, ठीक है। 120 to 130 के कैटेगरी में आते हैं सुपीरियर, 120 to 130 के कैटेगरी में आते हैं सुपीरियर, अबव 130 वेरी सुपीरियर। देन कम द हाई एवरेज, नेक्स्ट कम द एवरेज, देन कम द लो एवरेज, and then come the borderline। ठीक है, borderline is not clear to you all, so I will write it down this range again। आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हो up to 80 to 89। दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अबव 130 ये IQ स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में। जैसे जिनकी IQ 130 से अबव है वो वेरी सुपीरियर होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेवल जो होती है वेरी सुपीरियर होती है। 120 टू 130 वाले सुपीरियर होते हैं, 110 टू 119 वाले हाई एवरेज होते हैं, 90 टू 109 वाले एवरेज होते हैं, एंड 80 टू 89 वाले लो एवरेज होते हैं। इनके बाद जो कैटेगराइजेशन आता है 80 टू 89 के बाद, यहाँ के बाद जो कैटेगराइजेशन आता है 80 टू 89 वो होता है 70 टू 79, और फिर होता है बिलो 70। तो 70 टू 79 में कौन आते हैं? बॉर्डर लाइन होते हैं वे लोग, ठीक है। और बिलो 70 में आ जाते हैं आपके मेंटली रिटार्डेड, MR वाले या ID वाले, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। सो आई होप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल टू यू। सो द 2 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ऑफ द 2 मार्क्स, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई जस्ट होप कि आप लोग लिख रहे होंगे इसे। नाउ मूविंग टुवर्ड टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन विच इज अगेन आस्क्ड इन द 2 marks इज what is intellectual giftedness? What is intellectual giftedness? This is a question which was asked again in the 2 marks. 2 marks से क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं, and it was a question which was asked in the 2016 paper. So अगर हम लोग बच्चों इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस हैज द 2 extreme. The one person is intellectually gifted and one person came the intellectually deficient. या तो बहुत ही मतलब the person whose score, whose IQ is above 130, so they come under the category of giftedness, and whose IQ is below 70, so they come under the category of intellectually deficient or mentally retarded. So these two categories, these two extreme categories, और ये दोनों ही बट कैटेगरीज जो हैं, these two categories are rare in the population and very less percentage in the population. ये both of the categories आपको कम, the maximum population you will get of the average people, the average IQ person. Intellectually gifted भी आपको कम मिलेंगे population में और mentally retarded भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो ऐसे the such kind of people who are known to be intellectually gifted, they have a very high superior ability, high thinking, high motivation, and they have an intrinsic motivation. They do not require any kind of extrinsic motivation, so they are motivated internally. So इनको भी define आप करेंगे. So let us answer this question also, that how you will answer this one. Again in answering I told you that you will write down the heading. So you will write down the heading giftedness. Giftedness. आप ऐसे heading डालेंगे and then you will start writing the answer. So gifted children show higher performances because of their outstanding potentialities. These children have an IQ above 130 and show better occupational success and life adjustment. So some of the characteristics of the gifted individuals I will discuss with you. तो जो gifted होते हैं इनमें बहुत they have an early sign of, बेसिकली कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऐसे बच्चों में कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है जो उनके अर्ली ईयर्स में ही रिप्रेजेंट और शो होने लगते हैं. So the parents get to know and the teachers even get to know, like for example the class 2 child will be able to solve the equations and the problems of the class 4 or maybe class 5 or 6. So their intellectual ability is very high, their creative thinking is very high, their problem solving ability is very high, and they are something beyond than the talent and prodigies. They are gifted child, they are extraordinary child. So but handling of them is also very much required. You should be very much careful with them also, as we are equally taking all the precautions while handling the mentally retarded child. So it's not like that only the mentally retarded child requires your attention. Even the gifted children are also require your attention. So they are also important and make them feel important. Okay. So first is early signs of intellectual superiority. बहुत पहले ही दिखने लगता है कि वे लोग intellectually superior हैं. Intellectual superiority. Intellectual superiority. ठीक है. Early signs of intellectual superiority. Second है large attention span. Large attention span. उनका attention span बहुत large होता है.
यूजली हमारा जो नॉर्मल अटेंशन स्पैन होता है इट इज 5 + -7 यानी अप टू द 2 to 9 डिजिट्स, बट देयर अटेंशन स्पैन इज वेरी लॉन्ग. Okay, if a normal person will be able to detect the 2 or 3 stimulus in a fraction of second, they are able to detect the more than 5 or 6 stimulus, maybe more than 8 stimulus in a fraction of second. तो उनका attention span जो होता है वो large होता है. Then good recognition memory. If you write down these things, so I will move forward. उनकी जो मेमोरी होती है, थर्ड पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, गुड रिकॉग्निशन मेमोरी. मेमोरी भी बहुत शार्प होती है ऐसे बच्चों की. गुड रिकॉग्निशन, दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज एनीथिंग, दे कैन इजीली जनरलाइज एनीथिंग, दे कैन वेरी इजीली डिस्क्रिमिनेट, दे हैव अ वेरी हाई जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी. ठीक है, तो गुड रिकॉग्निशन मेमोरी होती है. ठीक है, देन है प्रेफरेंस फॉर नॉवेल्टी. प्रेफरेंस, उनको कुछ नई चीजें करना पसंद होता है, वो पुरानी चीजें नहीं कर सकते हैं. they are known for the originality, they are known for the novelty, they are the original thinker, they find new solution to any problem. So preference for novelty, उनको नई चीजें चाहिए होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू environmental changes. Sensitivity to, they are very sensitive toward anything. Sensitivity to environmental changes. Sensitivity to environmental changes. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल में जो भी चेंजेस आते हैं, तो दे आर वेरी मच सेंसिटिव. देन अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल, बहुत जल्दी ही दिखाते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में. मीन्स बेसिकली अगर कहें बच्चों तो उनके ओवरऑल एवरीथिंग विल डेवलप मोर देन देयर मैच्योरेशन पीरियड, उससे ज़्यादा ही उनका डेवलपमेंट होता है. दैट्स व्हाई दे आर नोन टू बी गिफ्टेड चाइल्ड. ओके, अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज, early appearance of language. So if you want to note it down, so you note it down also. So I just hope आपने इसे लिख लिया होगा. So I am going to discuss with you the next question. So 3 questions I have discussed with you. Moving forward, let's revise that 3 questions. The first I had discussed explain linguistic intelligence. Then I discussed classify people on the basis of IQ, or how IQ scores are distributed in a population. And third is what is intellectual giftedness. Now moving toward to the next question. Fourth, the fourth question is define emotional intelligence. Define emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस आपको डिफाइन करना है. ठीक है, ये जो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द 2 marks एंड इन द पेपर ऑफ 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. इमोशनल इंटेलिजेंस, यस चिल्ड्रन, just like intelligence, emotional intelligence is also play a very important role.
It is as intelligence is denoted by the term IQ. Similarly, emotional intelligence is denoted by the term EQ. EQ से हम इसे denote करते हैं. And I tell you that it has been found that those people who are high on emotional intelligence, they are found to be more successful in their life in comparison to the people those who are low. Okay, like it has been seen that the studies have done and the researchers have done, and it has been found that a person with high IQ but low EQ are not able to adjust in the society, not able to meet in interpersonal interaction, but the person with the low IQ but an high IQ can make themselves adjust with the person, adjust with the society. And they show also a successful work life experience and occupational successment. If we come to the point of definition, that how we will define the emotional intelligence, so in general, emotional intelligence is the ability to understand one's emotion as well as other emotion. Basically, it is the ability to understand and to regulate not only one's emotion but also others' emotion. That is known as emotional intelligence. There are some of the characteristics of the emotional intelligence which you have to write it down. So, emotional intelligence is the ability to monitor one's own and other emotion and to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action. This is a definition which is given by the Gordon Allport, and this definition is very famous in the field of emotional intelligence. So, I am going to write it over here also. सो EQ से इसको बताते हैं, ये आपको क्लियर हो गया. मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ. गॉर्डन ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है, ये आप लिखिए इसमें आंसर में. अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपोर्ट, according to Gordon Allport, emotional intelligence is the ability to monitor one's own as well as others' emotions According to Gordon Allport, emotional intelligence is the ability to understand one's own as well as others' emotion. I am going to write it down over here also. And to discriminate among them and to discriminate among them and to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action.
This is a definition which is given by the Gordon Allport. If you want to write it down, so you please write it down. And while writing, you will listen. इन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक एबिलिटी है अपने इमोशन को भी मॉनिटर करना और सेकंड पर्सन के भी, उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना और उस इंफॉर्मेशन को यूज करना ताकि अपनी थिंकिंग और एक्शन को आप अच्छे से कर सको. Now, so in this particular video, children, I had discussed with you 4 important questions which were asked in the previous year paper, and I also told you the weightage of the marks in which it has asked. So I just hope you perform very well. Thank you so much for continuously listening.